Good morning, everyone. Here, and I would like to thank first of all Ravi sir and Punit sir and the Emerging Mind communities for this session. I welcome you all from Oriental Group of Institutes, and I would like to thank the authorities in Oriental for allowing us to do this webinar in this current situation. But we are trying to do best whatever with whatever we have, and let's begin this session. I would like to introduce you to you all our main speaker here, Mr. Ravi Trivedi sir, founder of PushEngage. We have Mr. Punit Nema sir with us from EMC. We also have multiple EMC members, Oriental Group members, and authorities. Will introduce them soon. And without any further ado, let's start with the session. Punit sir, you can take over the stage. Thank you. Hi, thanks, Ziyad. Thanks for the kind introduction. Hi, everyone. This is Punit Nema, and I would like to welcome you all to this live feed on behalf of Emerging Minds community. A little about the Emerging Minds community. We are a group of people who encourage all the entrepreneurs in Bhopal and across India to collaborate and seek opportunities together to grow and innovate together. On behalf of EMC today, we thought in this situation of crisis that is going across the world, and global economies are impacted because of this. We thought let us take this opportunity to discuss with some of the entrepreneurs across India what should be the way through this. And in one such series, we have with us Mr. Ravi Trivedi, who himself is a well-established entrepreneur, and he's a CEO and founder of PushEngage. PushEngage has customer across 140 countries now, and he has his own long journey, and he has seen many such ups and downs. He is a very good person to hear from, given this situation. A bit about the session before I hand it over to Ravi to go through the session he has planned. We will be having a session by Ravi, followed by a Q&A session. So I would encourage all the people who are with us to keep their questions. And I understand Bhopal has a lot of inquisitive people, so I'm expecting a lot of questions today. So please keep your keep posting your questions on the feed today, so Ravi can answer after his session. Also, we will have a short session immediately after Q&A by Mr. Rajat Pallav, who is driving a very big campaign on Facebook and with Bhopal and MP authorities, which is called Bhopal IT Development Campaign. It's a campaign which represents the growth aspect and mindset of all the young entrepreneurs from Madhya Pradesh. So we'll hear from him as well. Without further ado, I would like to hand it over to Ravi so that we can hear from him. How do we get across these times of crisis? Hi, Ravi, over to you. Hey everyone, hope everybody is doing good. Hope you can hear me clearly and see my screen. So it's a pleasure to be here. I know the times are tough, but then there is always a ray of hope among the entrepreneurs. So we'll talk about some of it. Again, I'll just, like to maybe see more of you comment in the comment section. Again, I'm assuming I can see your comments. The first thing I was going to ask you guys is, मैं हिंदी में बोलूं कि इंग्लिश में कि मिक्स करके. So just give me a little feedback on that. I'll try to mix it because my goal here is to get my point across. Language is not the key thing. So please share that in the live comments if you can. So I'll take that. And also, as I do this, I want it to be very interactive. So I will try to break every 10 minutes, 15 minutes and questions करने की कोशिश करूंगा, as opposed to a classroom kind of a scenario जब केवल end में करते हैं, because I feel that's more interactive. So please feel free to send your questions.
I think Kundan says it should be a mix. So मैं mix की कोशिश करता हूँ. So I'll get started, I guess. So the idea of this session was, how do you take a idea and build to say 100 customers, right? And the reason why I kind of share this is, this has also been our journey. As Puneet said, I have done few startups, So I'll just begin by a little bit of my background, just so people know a little more of the context. So I started off my journey as a computer science. I actually went to undergrad or at MACT Bhopal, and then did ISC, then worked in HP for a few years, then did an MBA at Duke School of Business, worked in finance side for a few years in Bank of America. Then I was a venture capitalist in the US, and then I came back, and first I built Coupon Rani, which is a coupon site, and this is my second, which is a SaaS company, PushEngage, right? So this is my journey. I also do a little bit of angel investments. So the reason I put this slide up is, in some sense, I've seen a whole spectrum from development or software development, to marketing, to finance, and then also the journey from being an investor and building a company. So there is a broad stuff I have seen, and I want to share some of those insights as it relates to you starting up, right? So this is kind of who we are now and what I do. Again, I think Puneet already covered. PushEngage is today used by over 10,000 companies. It's a web push notification platform, and we have a lot of scale. So I'll leave it at that. And we operate all our company out of Bangalore. Although we are a US headquartered entity, we have customers all over the world. And it's a great, I guess, a case study for a SaaS company, I would say, where you can build out of any city in country, or in any city in India, and then sell globally. So that's kind of what I was going to talk about today. I know there is a lot of talk about COVID. I have only one slide for it, but my view is it's a short-term thing. This too shall pass. So stay positive, and I guess the entrepreneur in you should kind of be encouraged to do more. So this is kind of the summary of what I will talk about today. First, we'll say, how do you prepare for a startup? Then we'll talk about how do you actually go about finding an idea. Then we'll say, how do you take an idea to a product? And then we'll talk about how do you do product to customer. Again, these are like 4 big areas. Probably I'll try to summarize it to do justice to this session, but each of them in itself is like a hour or 2-hour session, right? But the idea here is, if some of you out here are thinking of doing a startup, how should they go about? Again, please keep your comments coming. That's my only way, and I think I'm seeing only Facebook comments. So please send in the Facebook comments. How many of you are thinking of doing a startup or already doing a startup? Maybe if you can answer that, that'll be good. And how many of you among those already have a product or an idea? So we'll just get started. So the first thing is to set the context. What am I talking about? Again, when we talk about an idea, there are a ton of things you could do. You could be building, let's say, a hospital. You could be building an educational institute. I am here talking about specifically a product company or a SaaS company, because that's my domain. So the other ideas, other things, I do not know how to speak much about. So this is kind of going to be the focus, which is a product company. And specifically, a lot of you in the room or listening to us virtually are folks who are doing software development and know how to build software. Now you can go out and use that skill to build a software product that you can sell globally. So that's the whole context of being here. Again, we think why this is important. We think IT services has been a great trend in India. But the next big trend in India is going to be product companies, and we are already seeing it. I mean, I'm sure a lot of you know about so many product companies that are happening out of India. If I was in the room, I was going to ask you actually name some product companies that you know, but again, I'm not. So you can maybe send in the chat. But again, for example, there is a company right out of Bhopal called Appointee, which is a SaaS company, and there are several of those across the country, right? And so that's the context of the companies we are talking about. So let's get started. So the first stage is before you start. How do you prepare? Again, so the thing to keep in mind is, remember and again, this may sound a little pessimistic, but I want you to be realistic. 95% of the startups do fail. So the idea is you should be better prepared to succeed. And remember the other key thing,
while a lot of you may think you will do a startup, but only 1 in 10 who think actually ever do. It does require inordinate amount of courage and conviction to be able to jump in startup, and post that it also uh, requires inordinate amount of uh, execution to succeed, right? And again, somebody shares that Appointee is founded by Oriental. I didn't know. That's great actually to hear. He's a great friend of mine. So the other thing I was going to say was, in terms of startups, so we know the stats that few of you will fail. So then how do you make sure you succeed? So this is like the preparation beforehand. So there are three must have skills for a product startup. First is the programming. And again, I was going to ask in the room, how many of you actually do actual coding? I mean, if you do that, that's a great asset. And their programming can be broken into multiple parts. One part could be around algorithms, one part is around front end and back end. Those are three specific parts. You may be good at all of them and maybe call yourself a full stack developer, but if you're good in one of them, that's what you should focus for. Now, So some of you most of them are here from computer science and IT department. So I think most of us can relate with you with this IT environment right now. No, that's great. And again, I'm sure some of you will have this question saying, okay, how do I acquire this skill? You know what? I did do this course in the school or college, but I'm not really good at it because I didn't do enough hands-on. So there are other, schools like Lambda School or startup schools which help you build projects. And my suggestion is do them. The more you code, the better you are, right? And so build projects for free or for small amount. Do whatever it takes to do coding. That's your biggest asset. That's your biggest strength, right? And you got to hone that while you're in school, college, and before you graduate, right? So that's the number one. Number two, the other two skills are marketing and sales. Now, what is marketing and what is sales? I'll just give you a one line different. Marketing is about communicating the product to the customer so that they come and sign up. Sales is once somebody signs up, how do you make them a customer, right? So those are the two different aspects. Somebody needs to know about your product, that's marketing, and you require good communication, good mastery of English, thinking like a customer. And then in sales, it's about understanding what is it that the customer needs, being solution oriented, and understanding and helping the customer with their need. Again, remember the key in both of them is good communication, right? So those of you who are good in communication can go deeper into one of these areas and say, I mean, the whole idea is you guys sitting in the room, four of you friends can do a startup, provided you have two out of those three skills. This is the way to de-risk, is what I'm trying to say, right? And if you don't have those skills right now, go join a product startup, such as ourselves or some other, several of them out there, and maybe a year out of college you do that, so you build those skills and then you can build your own startup, right? The final point I was going to make is building your startup in your final year is actually a great way of testing the market in a low risk way, because what happens is you can be building the product while you are there in the final, and we have seen that happen many times, and then you can see by building a quick prototype and seeing if there is a market, and we'll touch upon how do you build that, that you can quickly see if there is opportunity for the stuff that you're building. So again, this is just the preparing part. Anybody has any point? I know Punit opened up. Do you have anything to add, Punit, or anything you want to ask? Okay, anybody has, please free. I'm going to feel free, send in the questions in the Facebook, and I'm going to take one by one, right? So this is my personal journey, so I'm just interweaving my journey so you know how I did. So from in my journey, I think you've seen I took several years to learn marketing, finance, technology before I jumped in. It did help me because as a founder you got to play multiple roles, and I was able to wear those hats. So but that's not to say you should be building all the skills, as long as you know one of those three skills, and those three skills are programming, sales, or marketing. Again, I'm talking about SaaS or product startups. These are the only skills that we're talking about. So please, focus on building any of these. So this is the building before building. Now let's get into the next stage, which is, okay, now I'm ready. I need an idea. So how do I go about looking at this idea, right? So the first thing I put this slide saying that how do you select an idea in this era, which I call it the COVID-19 era. Again, this will be a short time. The first thing I was going to say in the basic is what type of ideas exist.
ideas exist to solve a problem that we all have or many people have, and for which customers are willing to pay some money. Now, what could be those problems? Those problems could be as easy as, you know what, I want to go from airport to my home. I need a transport. I have a need for food because I am hungry. So those are all type of needs that I have. And broadly, when you look at idea selection, there are two types of needs that exist. One we call as a unmet need. Unmet need का मतलब है कि वो नीड जो कि बहुत ऑब्वियस है, जो आपको चाहिए ही चाहिए, जिसमें आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये मेरी प्रॉब्लम है या मुझे ये जरूरत है, राइट? उसको अनमेट नीड कहते हैं, जो मैंने ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल दिया या फूड का दिया, राइट? वो अनमेट नीड में कहलाता है। दूसरी नीड होती है लेटेंट, यानी कि आपको पता नहीं है कि वो जरूरत है आपको, बट जब आप वो कोई चीज यूज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपका कितना टाइम बच रहा है या सेव हो रहा है। जैसे कि फेसबुक था जिसने कि नेटवर्किंग इतना इजी कर दिया, लिंक्डइन था, ये सब लेटेंट नीड प्रोडक्ट थे। स्टार्ट होने के पहले ऐसा कोई नीड एज सच नहीं थी, बट जब हमने यूज किया तो हमको समझ आया कि क्या नीड है। ठीक है, सो द रीजन मैं ये दो अलग अलग इसलिए बता रहा हूं कि आज की डेट में हो क्या रहा है कि लेटेंट नीड आइडियाज विल बी लिटिल मोर बैक सीट, क्योंकि अभी क्या है, दिस इज अ एनवायरमेंट वेयर वी से लो डिस्क्रेशनरी स्पेंड, यानी कि जो अर्जेंट है उसी को हम स्पेंड कर रहे हैं, जो नाइस टू हैव उसमें नहीं स्पेंड कर रहे हैं। तो जो अभी हमको, जो कस्टमर है जो पैसा यूज करेगा तो उन्हीं चीजों पे करेगा जो उसको सच में अर्जेंटली चाहिए। तो वन ऑफ द होल आइडिया इन आइडिया सिलेक्शन, हम लोग यूजुअली अनमेट और उसकी बात करते हैं कई बार, तो अभी के समय में अर्जेंट अनमेट नीड्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जैसे हेल्थ केयर का हो गया, या वर्क फ्रॉम होम और कोलैबोरेशन टूल्स का हो गया, या गेमिंग, बट रिमेंबर ये शॉर्ट टर्म के बेसिस पे यू कैन नॉट बिल्ड अ कंपनी। ये भी बोल देता हूं क्योंकि ये ट्रेंड है, इनमें से कुछ रिवर्स भी हो जाएंगे, कुछ कंटिन्यू करेंगे, बट दीज आर एटलीस्ट द नीड। सो बिल्ड फॉर समथिंग जिसकी सच में जरूरत है, विच इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई स्टार्टअप्स फेल इज नॉट बिकॉज आई गेस द टीम इज वीक, बिकॉज उन्होंने जो बनाया होता है उसकी किसी को जरूरत नहीं होती, या अगर कोई यूज करता है उसके लिए वो पैसे नहीं देना चाहता है। तो मेन प्रॉब्लम है कि कुछ ऐसा आप बनाएं जिसकी किसी को जरूरत है और उसके लिए वो पैसा देने को रेडी हो। दैट्स ऑल देयर इज टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग, राइट? सो दैट इज एक्चुअली द हाई लेवल समरी। इस समय सिर्फ ये कह सकता हूं कि यू हैव टू बी लिटिल मोर फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग द नीड। ओके, लेट मी सी what are the questions which are out there. Just scroll through these questions. So somebody, I think Faizan, asked about how do you learn about finance, right, from joining any company or some other source. So I think the whole idea there would be see, you're asking a very specific question which is more about learning. So yeah, absolutely, you can join a company, join a course. Again, finance is a very broad word, right? Abhi finance mein aapko kya janna hai? Do you want to know corporate finance ki stock market? So it all depends on that, and there are so many learning tools there. I mean, in worst case you can go and look at places like Udemy which have these courses. Aaj ki date mein bahut logon ne courses bhi free kar diye hain, at least this duration. So please go ahead and look at those. Varun has a question. I have an idea, but I don't know how to start it. What should be my first step, right? तो अब हम लोग वही बात करेंगे। ग्रेट क्वेश्चन वरुण। अब हम लोग एक्चुअली उस स्टेज में पहुंच गए हैं कि हमने अभी तक क्या कवर किया, कि आइडिया हमने कवर कर लिया हाई लेवल पे। मैंने आप लोगों को बहुत स्पेसिफिक चीजें नहीं बताई कैसे ढूंढना है, बट आप देख सकते हैं अपने अराउंड सराउंडिंग में कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या सॉल्व करना चाहिए। उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर, बट लॉट ऑफ इट इज ऑल्सो योर गट फील। सो आई विल लीव इट एट दैट। और इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड कोरोना वायरस रिलेटेड कुछ आपको आइडियाज करने हैं, तो देर आर प्लेसेस लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज coronahackathon.in, जहाँ पे उन्होंने अपने आइडियाज लिस्ट किए हैं। उस तरह की बहुत कम्युनिटीज हैं जहाँ पे लोग अपने आइडियाज लिस्ट करते हैं, जिनको बनाने वाले नहीं है, तो आप वहां से भी आइडियाज देख सकते हैं। सो ये हो गया आइडिया की बात। अब जो वरुण आपका पॉइंट है वो अब हम लोग कवर करेंगे कि कैसे स्टार्ट करें। सो लेट्स गेट इनटू दैट। सो द बिग थिंग आई वाज गोना से, आइडिया मिलने के बाद प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एग्जीक्यूशन, राइट? कि आइडिया तो बहुत लोगों के पास बहुत अच्छा हो सकता है, पर ये कहा जाता है कि अगर सक्सेस 100 मार्क्स की है तो आइडिया के उसमें केवल 10 नंबर हैं, 90 नंबर जो है एग्जीक्यूशन के हैं।
एग्जीक्यूशन यानी कैसे आप उसको बिल्ड करते। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए। अभी तक जो आपने आइडिया में रिसर्च की उसमें कुछ वो नहीं है, आप रिसर्च करिए, मार्केट में देखिए, सर्वे करिए। मैं आपको अभी और टेक्निक्स बताऊंगा कैसे आइडिया को वैलिडेट किया जाता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। और सबसे ज्यादा स्टार्टअप मैंने जैसे पहले भी बोला इसलिए फेल होती है कि जो वो चीज बनाते हैं उसके लिए कोई उसकी जरूरत नहीं होती और नोबडी इज विलिंग टू पे। और दूसरा रीजन है को फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट। तो वो तो हम लोग अभी इस डिस्कशन के लिए बाहर से रख सकते हैं, राइट। उसके अलावा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर कैसे हो गई कि क्या बनाया जाए, उसके लिए ये होगी कि वैलिडेट करें हम अपना आइडिया। तो वैलिडेशन का मतलब क्या है कि अगर आपको ये पता नहीं है कि आपका प्रोडक्ट कोई कस्टमर यूज करेगा तो वो एक प्रॉब्लम है, राइट। दूसरी चीज, अगर मान लो यूज करेगा तो वो पैसा देगा कि नहीं। तो आपके पास दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन, इज देयर अ कस्टमर हु नीड्स दिस प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर टू, इफ यस देन विल दे पे फॉर इट। तो वो उसको कहते हैं हम वैलिडेशन। तो हम कैसे वैलिडेशन करते हैं, तो ये एक हमारा फ्रेमवर्क है, आप इसको स्टडी करें या देखें, जिसे कहते हैं लीन स्टार्टअप फ्रेमवर्क। मैं जार्गन ज्यादा यूज नहीं करता, बट सिंपल से समझें तो इसका मतलब है आपने आइडिया लिया, उसको जल्दी से क्विकली कोडिंग करके एक प्रोटोटाइप बनाया, उस कोड को लेके आप मार्केट में चले गए, लोगों से आपने बात की, कस्टमर से, और कस्टमर से फीडबैक लिया कि वो लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, उनमें क्या उनको कमी दिख रही है, उस बेसिस पे नेक्स्ट आइट्रेशन बनाए। तो होता क्या है कि अगर आप कस्टमर के टच में शुरू से रहेंगे और कस्टमर से फीडबैक लेंगे जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। सो द होल पॉइंट हियर इज कि यू शुड बी एबल टू टेक द फीडबैक। तो what are those methods to take feedback? There is a word used, customer development या customer interview। उसमें क्या होता है कि you are basically making a list of target customers, then you are writing to them कि हम लोग इस आपके एरिया में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, और यू आर अवर अर्ली एडवाइजरी मेंबर, जो आप हमको एडवाइस कर सकते हैं। तो आप प्लीज मेरे पास फोन कॉल पे आए या मुझसे पर्सनली मिले। और सिंपल सा आइडिया है कि आप जाइए, कम से कम 30 से 50 कस्टमर से बात करिए, उसके पहले आप कुछ मत कोडिंग करिए। अगेन, दिस इज अ फिलॉसफी ऑफ लीन स्टार्टअप, पर दिस इज ऑल्सो द वीकेस्ट पॉइंट इन मोस्ट स्टार्टअप्स। क्यों? क्योंकि हाँ, जो लोग डेवलपर हैं उन लोगों को अक्सर किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं होता। उनका मतलब होता है यार चलो मैं कोडिंग करता हूँ, और वो जो सेल्स वाला उसको कोडिंग में नहीं। बट ये जो चीज है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, कि पहले आपको अपने आइडिया को वैलिडेट करना, और वहीं पे सबसे ज्यादा लोग फेल करते हैं, ये बता देता हूँ। बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स, बड़े बड़े लोगों की ये स्टोरी रही है कि उन्होंने पहले इसकी वैल्यू नहीं की, और फिर जब उनका पहला प्रोडक्ट फेल हुआ, जो पहला वर्जन जिसमें उन्होंने 6 से 8 महीने लगा दिए, जब लॉन्च किया तो बहुत बुरी तरह फेल हुआ, फिर उन्होंने आइटरेट किया। सो ये मैं आपको शुरू से कहता हूँ, आप पहले अपने आइडिया लीजिए, उसके 30 कस्टमर ढूंढिए, फिर आप कस्टमर इंटरव्यूज और कस्टमर डेवलपमेंट। अगेन इसके पर गूगल कर सकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। लीन स्टार्टअप एक फेमस मेथोडोलॉजी है जो कि फ्रॉम सिलिकॉन वैली टू ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो रही है। सो ये हो गया अपना नेक्स्ट पॉइंट, राइट। तो कैसे आपने आइडिया से कस्टमर से फीडबैक लिया, फिर उसको बिल्ड किया, राइट। तो यही कस्टमर डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था, इसमें अपने जो स्टेप्स हैं, पहले आपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर लिए, फिर उनसे इंटरव्यू में क्या पूछा, आपने पूछा कि उनकी सच में जरूरत क्या है, फिर आपने जो सोल्यूशन बताया उसको दिखाया, उन्होंने बोला कि वो चलेगा कि नहीं, फिर उन्होंने आपने चेक किया, वैलिडेट की वो पे करेंगे कि नहीं। अगर आपने शुरू में वो नहीं भी बनाया तो उसका स्क्रीनशॉट दिखा के उनसे फीडबैक लिया, राइट। उसके अलावा एक और मेथड होता है कि आप एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाएं, जिसे कि मिनिमम जिसे कहलाते हैं, और फिर उस पर कुछ ऐड चलाएं। आज की डेट में ऐड चलाना बहुत महंगा नहीं है। 10,000 रुपये या 5,000 रुपये में ऐड चलाने से आपके साइट पे इतने कस्टमर आ सकते हैं कि आपके 10 से 20 कस्टमर उसको यूज करें और उनसे फीडबैक लें। ये उन लोगों के लिए जो मुझे कहेंगे कि मैं अपने लिस्ट में नहीं जानता कि कौन पोटेंशियल कस्टमर होगा, वो ऐड चला के अपना ऑडियंस देख सकते हैं। बट अगर आपका ऐसा सिनेरियो है कि आपको पता नहीं आपके कौन कस्टमर हैं या कौन होगा, तो ये रेड अलर्ट है, आपको पहले ढूंढना चाहिए, आपको अपने इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो लेट मी जस्ट स्टॉप हियर एंड सी कि अगर कोई क्वेश्चन है। होपफुली मैंने वरुण का क्वेश्चन आंसर किया। गिव मी अ सेकेंड। तो Puneet has a question: how can one as a student might take a leap
into a startup, how to hedge risk of failure and keep up till we really do break even, apart from securing finance. So जैसे मैंने थोड़ा पहले थोड़ा सा कवर किया इस पॉइंट के बारे में, मेरे हिसाब से फाइनल ईयर या उसके पहले जब आपका कॉलेज चल रहा है, आपके पास इतना टाइम होता है कि आप साइड में कोई एक आइडिया लेके उसका प्रोडक्ट बनाएं, उससे अच्छा कोई मेथड ही नहीं है। और इस तरह की बहुत स्टोरीज हो चुकी हैं वर्ल्ड में और होती हैं। उस समय आप मिलके एक टीम बनाएं, प्रोडक्ट बनाएं और उसका सॉफ्ट लॉन्च करें। तो जब तक आपका ग्रेजुएशन होगा, आप पास आउट करेंगे, तब तक पता चले वो प्रोडक्ट के ऑलरेडी कुछ कस्टमर्स होंगे, तो आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा वो डिसीजन लेना कि मुझे यही करना है कि नहीं। तो अगर मुझे कोई बोले कि मेरे को डी रिस्क करना है, तो इससे अच्छा मुझे कोई तरीका नहीं दिखता। और जो फाइनेंसिंग की बात है, फाइनेंसिंग अक्सर उन्हीं को मिलती है जिनका प्रोडक्ट मार्केट फिट, या कि प्रोडक्ट में ऑलरेडी कुछ कस्टमर्स हैं, या जिनमें दिखता है कि उन्होंने कस्टमर्स के लिए कुछ सॉल्व किया है। तो वाइल ऐसा लगता है कि फाइनेंसिंग इज द राइट आंसर, बट फाइनेंसिंग इज ऑलवेज व्हाट आई कॉल एज अ लैगिंग इंडिकेटर। यानी कि फाइनेंसिंग सही प्रोडक्ट को फॉलो करती है, फाइनेंसिंग मिलने से सही प्रोडक्ट नहीं बनता। पहले प्रोडक्ट सही आता है या जो रेलेवेंट आता है, उसके बाद फाइनेंसिंग आती है। तो मेरे हिसाब से उस पर फोकस करें। ठीक है, अब राहुल हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, people buying things from people they like but not what they actually want। तो देखिए, हो सकता है कि पीपल में बाय थिंग्स फ्रॉम पीपल दे लाइक, पर ऑन एवरेज क्या होता है कि जो भी बाय करेंगे उसको कुछ तो परफॉर्म करना पड़ेगा। मान लीजिए दो प्रोडक्ट बराबर है, मान लीजिए आपको एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, एक आपके फ्रेंड ने बनाया, एक किसी अननोन ने बनाया, तो आप अपने फ्रेंड से लेंगे। पर अगर मान लीजिए उस फ्रेंड का सॉफ्टवेयर चला ही नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं। इनफैक्ट इट इज द अदर वे, आपका फ्रेंड से आपने लिया सॉफ्टवेयर, तो आप उसको ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट को फिर भी परफॉर्म करना पड़ता है, भले ही वो फ्रेंड का हो चाहे ना हो, इट इज इमेटीरियल, राइट। उसके अलावा कान्हा हैज आस्क्ड, इन अ स्टार्टअप व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, एग्जीक्यूशन, आइडिया, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, आइडिया और ये तो मैंने पहले भी कवर किया, फिर से मैं बोलता हूँ। अगर सक्सेस के 100 नंबर हैं तो केवल 10 पॉइंट्स मिलते हैं आइडिया को और 90 पॉइंट्स मिलते हैं एग्जीक्यूशन को। इनफैक्ट मैंने 10 भी ज्यादा दे दिए, आइडिया के एक्चुअली 2 ही होते हैं मार्क्स, 98% एग्जीक्यूशन है। तो आइडिया इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्टली द एग्जीक्यूशन। ठीक है, ओके। Bilal is asked, how can young entrepreneurs reach out to like-minded people or form a community where they can validate their thoughts? Great question, Bilal. देखिए, जो entrepreneurs हैं उनको जो अपना आइडिया वैलिडेट करना है, ये भी एक एक्चुअली ये डबल साइडेड मेरे हिसाब से ये फाइनर क्वेश्चन है। क्योंकि आपको लगता है मैं अपने फ्रेंड से पूछ लूं, अगर वो मुझे बता देगा तो सही होगा, पर मेरे हिसाब से दो तरह की वैलिडेशन होती है। फ्रेंड तो सिर्फ उसी लेवल पे वैलिडेट कर सकता है कि बहुत बड़ा ब्लंडर ना हो या बिल्कुल ही वैसा ना हो, राइट। पर जो रियल वैलिडेशन कस्टमर आता है वो केवल कस्टमर से आता है। तो मेरे हिसाब से तो आप भले ही कैसे जर्नी को आगे बढ़ाना है, जैसे आप, मैं आज बात कर रहा हूँ सैस प्रोडक्ट्स के बारे में, राइट, तो उस तरह से आप सीख सकते हैं प्रोसेस लेवल पे। बट जो रियल वैलिडेशन है आइडियाज का, वो तो आपको कस्टमर के साथ ही करना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स के साथ आप सीख सकते हैं प्रोसेसेस, बट जो फाइनल एग्जैक्ट जो प्रोसेस वैलिडेशन है वो, ठीक है। तो आई विल लीव, आई थिंक देयर आर ओनली फ्यू मोर क्वेश्चंस, आई विल लीव इट फॉर लेटर। ठीक है, तो ये हो गया कस्टमर डेवलपमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, हमने पहले डिस्कस किया आइडिया, और आइडिया में कैसे हमको अनमेट नीड वाले, यानी कि जिनकी अर्जेंट जरूरत है, उनको लेना चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया कि आइडिया से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, और हम लोग बना रहे हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। उसका क्या मतलब होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, उसको यहीं पे डिफाइन करते हैं। उसका मतलब है जैसे आप यहाँ घर बना रहे हैं, राइट, तो घर बना रहे हैं तो घर ऐसा हो जिसमें सबसे मिनिमम चीजें हैं, यानी छत भी हो, दरवाजा भी हो, खिड़की भी हो, मिनिमम होनी चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कि उसमें जैसे इसमें नीचे एग्जांपल दिया है कि पहले टेंट बनाया, टेंट इज अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट घर में रहने के लिए, दूसरा एक नेक्स्ट लेवल का बनाया, फिर एक बिल्डिंग बनी। सो धीरे धीरे जो मिनिमम काम, जिससे कि अगर किसी को रहना है तो वो टेंट में भी रह सकता है। तो आइडिया जैसे ये है कि मान लीजिए ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, तो उसमें कम से कम एक जगह होनी चाहिए जहां पे ईमेल आप भेज सकें, बस उतना ही बनाया। उसका रीजन क्या है, हम लोग क्यों एमवीपी और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की बात करते हैं प्रोडक्ट बनाने में, क्योंकि होता क्या है, प्रोडक्ट बनाने में बहुत एफर्ट और पैसा लगता है, और जब तक हम प्रोडक्ट बनाते नहीं, हमको पता नहीं है कि कस्टमर को चाहिए क्या,
तो इसलिए हम लोग पहले एमवीपी बनाते हैं, फिर जाते हैं कस्टमर के पास, देखते हैं कि वो कोई खरीद रहा है कि नहीं, और उसके बाद फिर हम उससे फीडबैक लेते हैं कस्टमर से कि भाई अब क्या करना है, अब आपको क्या चाहिए, और वही फीडबैक के बेसिस पे आगे बनाते हैं. सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ एमवीपी. तो अभी तक हमने क्या बात की, आइडिया ढूंढना, फिर आइडिया से कैसे एमवीपी जाए, और एमवीपी जाने से पहले हमको कस्टमर डेवलपमेंट और इंटरव्यू करना चाहिए, और फिर हमको मिनिमम प्रोडक्ट बनाना चाहिए. तो यहाँ तो हो गई प्रोडक्ट बनाने की बात. ठीक है, अब आई विल डाइग्रेस अ लिटिल, पर क्योंकि आप सब टेक्निकल हैं तो आई विल ऐड अ लिटिल बिट कि आपकी जो टेक्नोलॉजी चॉइसेस होती हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, दो तरह के स्टैक हैं, देयर इज अ लैम्प स्टैक, देयर इज अ मीन स्टैक, और ईच ऑफ देम हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स. आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ये वो चीजें जो आप पूछ सकते हैं कि क्या स्केलेबल के लिए क्या होना चाहिए. बट शुरू में स्केल की इतनी कंसिडरेशन नहीं होती एमवीपी में. आपको पहले सिर्फ क्विकली कोड बनाना आना चाहिए जिससे कि कस्टमर को आप प्रोडक्ट दे सकें. उसके बाद होता है कि आप स्केलेबल स्टैक बनाएं. और रिमेंबर, आज की डेट में क्लाउड बेस्ड होस्टिंग है, वेदर इट इज डिजिटल ओशन, एडब्ल्यूएस, अज्योर, गूगल, सारे वेंडर्स हैं. उसकी वजह से क्या है कि जो आपको हार्डवेयर और जो क्या कहते हैं, कई जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट और स्केल वाले जो चीजें हैं बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं. तो उसकी वजह से रिमेंबर, इवेंचुअली आपको स्टैक आपका क्या है वो डिसाइड करना पड़ेगा. एमवीपी के समय आप उस पर यू कैन स्पेंड ओनली अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट बाद में वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो ये मैंने अभी तक आइडिया से लेके प्रोडक्ट की बात बताई. तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ कि हम लोगों ने कैसा किया, राइट. जैसे मैंने पहले बताया था प्रिपरेशन के लिए, अब मैं बताता हूँ अपना. तो हम लोगों के केस में व्हेन वी स्टार्टेड, वी वर रनिंग कूपन रानी एट दैट टाइम, and we were always looking for new marketing channels, and Chrome had announced support for web push notifications in April 2015, or we built a product for our in-house use. And when we started using, we saw the ROI was like 5 to 20 times more than email. And uske baad, what we ended up seeing was there were not many people who were actually building this product in the market. There were not many, and the market is. So we decided, and I was always a big believer in a SaaS product, to make it a product and kind of start selling it separately as a separate division. And that's where we started. And then we built a MVP out of what we had built for in-house 3 या 4 महीने में. And in January 2016 we launched it. We started getting very good feedback, and then we continued building it, right, and started selling it fully. So our journey to some extent was validated because we were one of the end users. And then initially when we launched in again December 25th uske baad, then we were able to get the feedback. So that's kind of our journey so far, or how we kind of went about this. So I have just quickly covered, I guess, from idea to product. I know इसमें बहुत सारी points हैं. I know each of this requires much deeper, but मेरा यहाँ पे goal था high level का. Now I will get into customers. Again, customers is one of the area of my, I guess, specialization या interest, because product तो सब बना लेते हैं, customer कैसे लाना, right? तो वो मैं आपको थोड़ा सा share करता हूँ. उसके पहले let me see if there are any questions. Guys, please keep asking questions. आप ही का session है, आप ही का time है. अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो it'll be good for you. So I have a question. What motivates you? So I think for me, again, it's a softer kind of question. Back in, when I moved back to India, I had an aspiration of building a 100 million revenue business, and that was largely driven from an interest in building something from scratch, and also to build something for the country, in the country, right, a global product. So it's been largely that. And again, I think solving some of these I guess the customer, or I would say solving these challenges while you're building the company, is something that interests me, right? I've always been a problem solver, and I always feel ki if you give me any set of conditions and problems, I somehow come up with a solution. So I felt this was a great way of my skills to kind of build something from scratch, right? And I also love building new things, or being in the touch of new stuff. So that kind of helps. All right, so let's come to I know we ran through a lot of stuff, and again, my apologies if some of you are not able to
fully follow, please ask me question. That is a way actually I can answer it something at your level where you can understand it आपके केस में कैसे अप्लाई होगा. बट लेट्स कंटिन्यू. अब मेरा प्रोडक्ट बन गया, अब मैं कस्टमर कहाँ से लाऊं, कैसे आएंगे कस्टमर. तो सबसे पहले हमको समझना है कि क्या हमने बनाया है. तो दिस इज अ वेरी फेमस स्लाइड फ्रॉम क्रिस्टोफ फ्रॉम पॉइंट 9 कैपिटल. ये आपको कभी भी सैस बिजनेस के बारे में कहीं मिलेगा. तो सैस बिजनेस बाय द वे क्या होते हैं? सैस बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जो सॉफ्टवेयर को मंथली लाइसेंस पे सब्सक्रिप्शन में बेचते हैं. जैसे हमारा सॉफ्टवेयर है, हर लोग $29 $49 ऐसे. नाउ सैस बिजनेस के क्या बेनिफिट होते हैं? बेनिफिट ये होता है जो मंथली सब्सक्रिप्शन देता है तो उसको आप एक बार अक्वायर करते हो तो वो आपके साथ ज्यादा समय तक रहता है एज कंपेयर टू ई कॉमर्स बिजनेस. ई कॉमर्स बिजनेस में क्या होता है? डेली आपको वो कस्टमर अक्वायर करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि ओल्ड कस्टमर नहीं आता, वो भी आता है, बट सैस बिजनेस में वो स्टिकीनेस थोड़ी ज्यादा होती है. सो दैट इज अ सैस बिजनेस. जस्ट टू काइंड ऑफ टच अगेन जिसकी बात कर रहे हैं, तो सैस बिजनेसेस में इस तरह से डिफाइन करते हैं कि आपका एनुअल टिकट साइज, यानी आप साल में कितना पैसा ले रहे हो. आप $100 ले रहे हो उनसे, 1000 ले रहे हो, या 10,000 या 100,000, राइट? डिपेंडिंग ऑन दैट आपका प्रोडक्ट है. यानी कि आर यू हंटिंग फॉर अ बी और अ रैट, अ रैबिट, अ डियर और एलिफेंट. दिस इज व्हाट इज अ कॉमन टर्मिनोलॉजी. बी का मतलब है आप बहुत सारे छोटे छोटे कस्टमर यानी कंज्यूमर ढूंढ रहे हो. रैट का मतलब है आप स्मॉल बिजनेस ढूंढ रहे हो जो कि आपका यूज करेंगे. रैबिट का मतलब है मीडियम साइज. और डियर और ये जो एलिफेंट है इसका मतलब एंटरप्राइज. रीजन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारी मार्केटिंग जो टैक्टिक है, कंज्यूमर की अलग है, स्मॉल बिजनेस की अलग है, मीडियम साइज की अलग है, एंटरप्राइज की अलग है. और जो आपको अक्वायर इनको करना है, इनके लिए प्रोडक्ट बनाना है, उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग है. तो जस्ट रिमेंबर जब आप बिल्ड करो, इनफैक्ट ये स्लाइड आपकी या ये क्वेश्चन आपका प्रोडक्ट स्टेज पे ही होना चाहिए कि मैं बना किसके लिए रहा हूँ प्रोडक्ट. मान लीजिए मैं ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर ही बना रहा हूँ, पर किसके लिए बना रहा हूँ? कंज्यूमर के लिए बना रहा हूँ, स्मॉल बिजनेस की, एंटरप्राइज, राइट? वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि उस पर बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट में भी और मार्केटिंग में डिपेंड करती है. तो अगर मान लीजिए हम लोग इस मिडिल में ऑपरेट करते हैं यानी 1000 से 10,000 वाले स्पेस में, तो अभी जो मैं चीजें बताऊंगा उससे रिलेटेड रहेंगी मोस्टली, बट मोस्ट ऑफ द सैस इसी स्पेस में ऑपरेट करता है, यानी कि जो टिपिकल सॉफ्टवेयर है आप देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोगों ने जो क्या किया जब लॉन्च किया, सो आई विल जस्ट शेयर फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव सो यू कैन सी कि हाउ वी गॉट आवर कस्टमर्स एंड मे बी यू कैन रेप्लिकेट. सो पहले 10 कस्टमर हमने कैसे लाए? सबसे पहले हमने ब्लॉग स्टार्ट किया इवन व्हेन वी वर स्टार्टिंग डेवलपिंग द प्रोडक्ट, राइट? सो विच मीन्स कि इससे पहले कि आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए आपका ब्लॉग होना चाहिए. ब्लॉग में पर आप लिखेंगे क्या? आपको मान लीजिए मेरा कस्टमर है मार्केटर, तो आपको ऐसा मार्केटिंग कंटेंट उसमें लिखना चाहिए जो कि उसके लिए रेलेवेंट और यूजफुल हो. आप अभी भी जाके हमारे ब्लॉग पे चेक करें blog.pushengeage, तो हम मार्केटर को ही टारगेट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी हमने फ्राइडे को एक गेस्ट स्पीकर से वेबिनार कराया था. वो आयरलैंड का स्पीकर था. एसईओ के ऊपर उसने वेबिनार किया ई कॉमर्स कंपनीज के लिए. देवर मोर देन 500, एक्चुअली 450 रजिस्ट्रेशंस विच हैपेंड. हम लोगों ने वो वेबिनार क्यों किया? क्योंकि हमारा टारगेट मार्केटर्स हैं. तो वो एक एग्जांपल है. उसी तरह ब्लॉग हमारा जो है वो भी मार्केटर्स के लिए बना है और हमारा कंटेंट जरूरी नहीं कि केवल पुश नोटिफिकेशन पे हो, बट मार्केटर्स के लिए जो भी यूजफुल है, जो कि वो रीड करने आएगा, तो हम लिखते हैं. और ये सबसे नंबर 1 टेक्निक है. आप प्रोडक्ट बनाने के साथ ही अपना ब्लॉग लॉन्च करें और जो आपका टारगेट है, इनफैक्ट ये पॉइंट मैं पहले उतना हाईलाइट नहीं किया, मैं फिर से करता हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोडक्ट बनाने के आइडेंटिफाई के अलावा होती है आपका टारगेट कौन है. अगर आपको पता नहीं है कौन टारगेट है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आपको टारगेट कौन है और उसके लिए आप क्या सॉल्व कर रहे हैं वो जानिए और उसके ऊपर आप लिखिए. सो दैट इज योर ब्लॉक, राइट? सेकंड थिंग इज कस्टमर डेवलपमेंट स्टेज लीड. तो मैंने वो कस्टमर इंटरव्यू प्रोसेस बनाया था. जो भी आपके इंटरव्यू प्रोसेस में आएंगे वो ऑब्वियसली आपके कस्टमर बन जाते हैं. स्पेशल प्राइस पे ही भले हो बट वो कस्टमर बन जाते हैं बिकॉज उनका उसमें मोटिव रहता है. उनको लगता है कि उन्होंने आपको फीडबैक दिया, उनको आप एक तरह से अपने साथ जर्नी में इंक्लूड कर लेते हो. उसके बाद प्री लॉन्च जो लीड्स होती हैं, आप मान लीजिए ऐड चलाएं या आप एक लॉन्च पेज बनाएं जहां पे आप लोगों से लीड्स कवर करें. उसके बाद आपका नेटवर्क होता है जो आप लिंक्डइन में करें या उसके अलावा करें, राइट?
फाइनली मैं बोलना चाहता हूँ, जब हमने फर्स्ट से 10 कस्टमर में हमने अपने कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर सक्सेस पे बहुत ध्यान दिया, क्योंकि जब स्मॉल मीडियम बिजनेस कोई सैस प्रोडक्ट खरीदता है, वो हमसे फोन पे बात नहीं करता, हो सकता है लाइव चैट में ही करे या हमसे ईमेल में ही बात करे, तो हम लोग खुद ही आंसर करते थे, और मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जिससे कि इट बिकम्स अ सेल्स चैनल। सो आप कैसे भी फ्री या कोई भी कस्टमर को इंटरेक्ट कर रहे हैं, उससे सारा डिफरेंस पड़ता है इवेंचुअली कि आपका प्रोडक्ट कैसे लोग यूज करते हैं। ओके, लेट मी स्टॉप देयर। आई नो देयर इज लॉट ऑफ questions, so let me just look at them. So Yashraj asks, how can we create a good team for startups? So Yashraj, it's a very it's a very good question. फंडामेंटली जो मैंने पहले आपको बहुत शुरू में एक स्लाइड में बताया था कि 3 चीजें चाहिए मुझे अगर आपको प्रोडक्ट कंपनी बनानी है। पहली है टेक्नोलॉजी स्किल, यानी डेवलपमेंट कोडिंग वाली, दूसरी है सेल्स वाली, तीसरी है मार्केटिंग वाली। तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपको टीम बनानी है तो इन 3 स्किल के अक्रॉस आप अपने क्लासमेट्स या फ्रेंड्स या सीनियर्स, उनमें से लोगों को ढूंढें और उनको शामिल करें, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल के लोग बनेंगे, राइट? ठीक है। उसके बाद रमीज हैज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द इंजीनियरिंग फील्ड इन द करंट एज? तो देखिए, अगेन इट्स अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक द ग्रोथ इंजन फॉर एनी कंट्री, है ना, and it drives growth by you getting a new idea and building new business and driving more jobs. But engineering की जो आप बात कर रहे हैं, engineering is also a very broad word. हो सकता है आपका engineering मतलब सॉफ्टवेयर ना हो, in that case there are many engineering services जिसमें अलग अलग स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। इफ इट्स अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देन एब्सोल्युटली मेरे हिसाब से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और सॉफ्टवेयर इज व्हाट वी थिंक इज गोइंग टू ईट द वर्ल्ड, एज दे से, देयर इज अ फेमस सेइंग कि द नेक्स्ट वेव इज ऑल सॉफ्टवेयर, व्हिच इज अगेन you see AI and all those things that you hear of, they're all powered by software. So in other words, everything eventually the machines are doing, which are actually being done by a software, right? So that is how important these are going to be. And who is going to create these companies? An entrepreneurship or entrepreneur, right? All these companies which are new age companies are created by entrepreneurs. So hence entrepreneurship becomes the way by which people actually innovate and drive the new products. Okay, so Varun has a question, how do you make sure that one's ideas does not get stolen, as I have been a victim? So I think, Varun, again, this is a very good question and I have a very different take on it. एक ये बहुत कॉमन मिथ होता है कि भाई मेरा आइडिया है, मैं अपने फ्रेंड से शेयर करूंगा, कहीं वो चुरा ना ले, राइट? चलिए फ्रेंड नहीं, मान लीजिए कई लोग तो कहते हैं अरे इन्वेस्टर से भी शेयर करूंगा तो कहीं वो चुरा ना ले। तो मेरा सिर्फ एक सजेशन है, और वही पॉइंट जो मैंने पहले बोला था, अगर आप उसको बिलीव करते हैं या ओवर टाइम आप करेंगे, अगर 100 पॉइंट सक्सेस के हैं तो उसमें 2 ही नंबर हैं आपके आइडिया के, तो इसलिए कभी आइडिया की चिंता नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको दूसरी बात बोलता हूँ, अगर किसी ने आपका आइडिया ले भी लिया तो मार्केट में आप ये मान के चले कंपटीशन हमेशा ही रहता है। अगर आपका फ्रेंड या आपका जान पहचान वाले ने नहीं लिया तो कॉम्पिटिटर तो ले ही लेगा, क्योंकि ऐसी कोई मार्केट नहीं है जिसमें आप ऐसा बनाने लगे और दूसरों को पता ना चले। सबको पता रहता है और उसको देख के और लोग आते ही हैं। सो इवेंचुअली स्टार्टअप इज नॉट अबाउट कि आइडिया छुपा के मैं कहीं से कस्टमर ले आऊं। इट्स ऑल अबाउट एक आइडिया है, एक प्रॉब्लम है कस्टमर की जो मैंने सॉल्व की, और मैं सबसे अच्छा सॉल्व कर रहा हूं, या अपने कस्टमर के लिए मैं सबसे अच्छा सॉल्व कर रहा हूं। आपका कस्टमर के पास भी हमेशा ऑप्शन रहेंगे, उसके पास भी कोई रीजन होना चाहिए आपके साथ रहने का, तो आपको उसको इस तरह का प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो आप देख लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए, भले ई कॉमर्स हो गई, फूड ऑर्डरिंग हो गई, कोई भी प्रोडक्ट, CRM, ईमेल मार्केटिंग, सब में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो दैट इज माय सजेशन। Aasim has a question. If the COVID-19 pandemic goes on for a longer time than expected, what could be the possible challenges an entrepreneur will be facing, and what category of new ventures will it affect? So, देखिए, मैंने अभी तक फंडिंग की ज्यादा बात नहीं की. So, one of the things we do see is कि funding has become more restricted, for general ideas, because investors are also seeing कि क्या हो रहा है, right? But सो वन अजम्पशन कुड बी कि हम ऐसी स्टार्टअप बनाएं जिसको 6 महीने से 12 महीने फंडिंग की जरूरत ना पड़े और हम अपने पैसे से ही उसको बना सकें. दैट कुड बी वन वे दैट आई कुड से दैट दिस विल हैव एन इम्पैक्ट. द अदर वे is actually
इन अ वे दिस इज लाइक अ कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, जिसे कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में जिन्होंने कभी देखा या इन्वेस्ट किया कि जब सब लोग डरते हैं उस समय स्टॉक मार्केट डाउन होता है, तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है कि मान लीजिए अभी ये पेंडेमिक लॉन्गर चलेगा, होगा क्या कि इसके चलते बहुत सारे लोग हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप ना करें, राइट। पर अगर आप ऐसी एज में एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं और आप पर मेन चीज एंटरप्रेन्योरशिप करने की नहीं, आप जो आइडिया बना रहे हैं वो सही है कि नहीं या उसमें सक्सेस है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट। अगर उसमें थोड़ी भी सक्सेस मिलेगी तो जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो सारे इन्वेस्टर्स वापस आ जाएंगे, तो आपकी चांस अपने आप ही, अगर इन्वेस्टमेंट की देख रहे हैं तो सक्सेस हो जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट कैटेगरीज ऑफ न्यू वेंचर्स, तो मैंने पहले भी कुछ पॉइंट्स इसमें बताए थे कि सबसे पहले आप देखिए कि हेल्थ केयर वाले या कोलैबोरेशन वाले टूल्स जो वर्क फ्रॉम होम जिनसे यूजफुल होता है, या इनफैक्ट आज की डेट में गेमिंग। बट आपको फिर मैं बोलता हूँ जो करंट ट्रेंड्स हैं उसके बेसिस पे आइडिया आप कंपनी ना बनाएं, क्योंकि अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, बीच में हमने देखा कि डिजिटल एकदम से बहुत ग्रो हुआ, राइट, डिजिटल स्पेंडिंग, एंड जब डिमोनेटाइजेशन हुआ एकदम से स्पाइक आई, फिर हमने देखा कि वो फिर से कम हो गई, राइट। थोड़ा सा बढ़ा, ये मना नहीं कर रहा हूं, पर मेरा पॉइंट है कि अगर आप ऐसा बनाएंगे अभी एरिया अभी के हिसाब से, तो ऐसा ना हो कि वो 6 महीने बाद इररिलेवेंट हो जाए। तो केवल अभी के लिए ना बनाए, ऐसा बनाए जो आपको लगे कि बाद में भी हो सकता है यूज, या कई चीजों में कुछ बिहेवियर ह्यूमंस का चेंज हो जाएगा इसकी वजह से, अगर उसको लेके बनाए हमेशा के हिसाब से तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, I guess next question, what are those attributes which contributed? So again, Rajat, this is a again tough. See, usually as an individual, we have bias towards what do you say, हम जो करते हैं कि यार हमने ये किया तो हमारी सक्सेस हुई, राइट। तो इफ आई लीव दैट असाइड, राइट, टू सम एक्सटेंट, बिकॉज आई फील आई माइट हैव बीन लकी, राइट, ऐसा नहीं है, मतलब आई डोंट नो, राइट, बट आई डू नो वन थिंग कि हार्ड वर्क एंड सोल्यूशन निकालना किसी भी सिनेरियो में, those are the things, and third is persistence, right, that have always helped me in being successful, and also not to a large extent worrying about what others say and what others will think, because when I started entrepreneurship I was already at a very senior level and everybody was at a partner level, and also it doesn't matter, so not worrying about that actually helped me, just focusing on building it, right। ठीक है, सो लेट्स कीप गोइंग। सो अभी तो हमने 0 से 10 कस्टमर्स की बात की। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल अगेन, सम ऑफ इट मे बी नॉट रेलेवेंट टुडे, बट आप ये स्लाइड बाद में देखें। ये हमारी जर्नी है 0 से 10 की, फिर हमने 10 से 100 कैसे की अपने साइट के लिए। तो हमने जो सेकेंड स्ट्रैटेजी यूज की पहले 10 कस्टमर के बाद, जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स। अगेन दिस इज अ मार्केटिंग टर्म। इन्फ्लुएंसर मतलब, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ विराट कोहली कभी किसी ड्रिंक का, स्पोर्ट्स ड्रिंक का कभी ऐड देता है, तो लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि ही इज एन इन्फ्लुएंसर, ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, राइट। उसी तरह से हमारी इंडस्ट्री में हम इन्फ्लुएंसर ढूंढते हैं, सिंपल सी बात है। हम मार्केटिंग प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमको मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर ढूंढना पड़ता है। लकीली हमारे लिए हमको विराट कोहली जैसे एक्सपेंसिव लोग नहीं लेने पड़ते। हम लोगों को हो सकता है बहुत अच्छे एफिलिएट या इन्फ्लुएंसर हो, पर उनके साथ हम लोग वी बिल्ड रिलेशनशिप, और उनके साथ हम लोग उनको फॉर एग्जांपल अपना प्रोडक्ट का ट्रायल देंगे, उनको बोलेंगे कि हमारा प्रोडक्ट रिकमेंड करें, क्योंकि एक एक इन्फ्लुएंसर जो है बहुत सी सेल ड्राइव कर सकता है। सो इन्फ्लुएंसर का ही एक वर्जन है एफिलिएट। एफिलिएट का मतलब होता है आप मेरे लिए सेल ड्राइव करें तो मैं आपको इतना कमीशन दूंगा। दैट इज समथिंग दैट हैज वर्कड रीजनेबली वेल। इट इज नॉट द नंबर वन thing for us, but so we built this. We had top influencers. I personally know a lot of them. Also the large affiliate and influencer space में there is a 80-20, यानी कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो 80-90% सेल ड्राइव करेंगे। तो आपको सिर्फ वो 5 या 6 रिलेशनशिप बनानी है, उनको टूल पर उनको भी कन्विंस होना चाहिए, ऐसे वो नहीं कुछ सेल करते। दे ऑल्सो शुड फील कि प्रोडक्ट स्टेबल है, सही चल रहा है, खुद यूज करके देखेंगे तभी वो रिकमेंड करेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो हमने 10-100 में यूज की। दूसरा, ये जरूरी नहीं कि सबके लिए चले, बट आई वांट टू शेयर दिस इनसाइट सीक्रेट इन सम सेंस। ये आपने कई बार देखा होगा कि जैसे हॉटमेल की स्टोरी थी कि हॉटमेल जब पॉपुलर हुई तो क्यों हुई, उनकी हर मेल में नीचे आता था पावर्ड बाय हॉटमेल, राइट। तो ये हमने देखा हैज बीन रियली पॉपुलर। तो ये ग्रूव का एग्जांपल है। ग्रूव एक सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट।
हमारे केस में जब आप हमारा पॉपअप देखेंगे उसमें लिखा होता है पावर्ड बाय पुश एंगेज। हमने ये देखा दिस रियली वर्क्स वेरी वेल, और हमारी जब नोटिफिकेशन भी कोई भेजता है तो उसके उसमें लिखा होता है यूटीएम इक्वल टू पुश एंगेज। तो उससे होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई साइट यूज कर रही है, वो साइट का कॉम्पिटिटर या उसका कस्टमर जब भी कोई नोटिफिकेशन देखता है उसको पता है कि इस साइट पे पुश एंगेज की नोटिफिकेशन है, उससे वर्ड ऑफ माउथ बहुत जल्दी फैलता है। तो ये आप अपने प्रोडक्ट में देखना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं जिससे कि लोगों को पता चले कि आप ये वाली सर्विस इस कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जब आप अपना लैपटॉप देखते हैं, लैपटॉप में लिखा रहता है ना इंटेल इनसाइड, वो इंटेल की ब्रांडिंग है, वही चीज है। इंटेल ने आपकी चिप, चिप तो केवल एक ही है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो गई। आपको रैम भी है, पर रैम की वाले ने तो नहीं डाल पाया कि यार मेरी रैम इसमें इनसाइड है, वो तो सिर्फ सीपीयू वाला डाल पाया, राइट। उसी तरह से हम लोगों ने वही पावर्ड बाय डाला जिससे कि कस्टमर को दिख जाए कि भाई ये यहाँ का पुश नोटिफिकेशन पावर कर रहा है। ये बहुत दिस वाज वेरी यूजफुल फॉर अस एंड इन मेनी इंडस्ट्रीज इट वर्क्स। ओके, उसके अलावा देर इज अगेन लॉट ऑफ थिंकिंग आउट देयर कि एडवर्टाइजिंग इज बैड। स्पेसिफिकली यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु टेक वेरी स्ट्रांग व्यूज कि यार अरे हमने तो कस्टमर बिल्ड के जीरो एडवर्टाइजिंग है उससे। सो आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ दैट। इनफैक्ट targeted advertising always is very useful for getting early customers, and this is like a set of those suggestions. Again, this is more advanced, I'll leave it at that, but this is what I would say. See, don't not look at advertising at all. जब आपने मान लीजिए 6 महीने लगा के वो प्रोडक्ट बनाया तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ही इतनी है, तो उसमें अगर आपने 50,000 1 लाख की एडवर्टाइजिंग की तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका गोल एक बार प्रोडक्ट बन गया तो क्या है, सिर्फ एडवर्टाइज, सिर्फ आपका यूजेज होना चाहिए, राइट। उसके बाद हमने कई कम्युनिटीज और मार्केट प्लेस यूज की। अगेन इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई विल ट्राई टू wrap this up. I have few more slides actually. The हमने कम्युनिटीज टारगेट की, तो हमारी जो कम्युनिटीज कौन सी थी, हम मार्केटर्स को टारगेट कर रहे थे। तो हमने देखा कि ई कॉमर्स वाली साइट्स और मार्केटर्स कहाँ पे रहते हैं, कौन से ग्रुप में हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मैंने AHRF का लिंक दिया है जहाँ पे लिखा है 9 मार्केटिंग ग्रुप्स ऑन फेसबुक, राइट। तो यहाँ पे वो कम्युनिटीज हैं, हमने वहां पे अपना प्रेजेंस रखा जिससे कि कोई आंसर कर सके कोई क्वेश्चन, अगर किसी को डाउट है। वहां पे हम लोग स्पैम नहीं करते, रिमेंबर, बट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू आंसर एनी रेलेवेंट क्वेश्चन देयर, राइट। उसके अलावा इफ यू हैव क्योरा अगेन आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज क्योरा, बट हमने क्योरा पे वी डिड marketing, or I would say answering the questions, right. It is not built towards uh, spamming the user, but Quora mein you'll see a lot of CEOs, lot of people asking questions and we answering them, right. Uske baad Reddit is there. Then in our community we have growth hackers and inbound.org. तो हमने ये सारी communities use की और we were there. उसके अलावा the final point I'll say, the marketplaces are very big for us, meaning वर्डप्रेस प्लगइन की जो मार्केट प्लेस है या शॉपिफाई की है, these are very big for us, and because this is where we list our plugins and people search. So those are the places how people found us. Again, finally I will say there was content that we used heavily. Like I was talking about content on the blog, but we also wrote guest posts. Again, there's a whole realm of what we call as organic search and PR. PR is something which is we try to do, and PR is more around, okay, for example, जैसे अभी ये webinar है, that acts as, okay, if I get an opportunity to speak to students or otherwise, right, not only I do help, but it also increases the brand. So I do also consciously make an effort to see I can do PR presence, because that actually helps. So those are, I guess, high level कैसे हमने customer acquire किए. Again, I have given a lot of stuff around acquiring customers, but maybe your need today is not about customers. It's more about ideas कैसे ढूंढे and product कैसे बनाए, right? So please ask me questions. मेरे हिसाब से I'll just go back, I guess, to that point कि सबसे पहले ideas वहां से ढूंढें जहां पे आपको खुद रियल नीड दिख रही है, वो ढूंढें जहां पे कस्टमर आपको बोल रहा है कि वो सच में उसका पेन पॉइंट है और वो पैसे देने को रेडी है। और प्रोडक्ट बनाते समय सबसे मिनिमम बनाएं जिसको जल्दी से जल्दी बना के आप दे सकें और टेस्ट कर सकें, और उसके बाद फिर आप अपनी मार्केटिंग शुरू करें, जो मैंने ऐसे बताया, राइट।
Finally, I'll just close by saying this is a classic AAR model जो कि SaaS में use होता है. पहले you acquire, then activate, then retain. Again, each of them require more discussion. We just went to till the acquisition stage in this slide. After the acquisition, what do you do for activation? How do you retain? Convert to revenue. Each of them are individual. You can look at Dave McClure, who's a famous entrepreneur, PayPal entrepreneur, now running a 500 startup, a fund. You can see that for that, right? So this is kind of, I guess, a summary. This is a set of tools I did refer a little bit. Maybe I didn't touch much today, but usually I talk about competitor ki search karna, advertising. You can look at these, for research that we do. And with that, I think I will open it up for questions. I know I ran through a lot of material. I was really missing a lot of you in the room, but although thanks to all of you who were very active in the Facebook chat. So I'll just check the questions. Anybody can come online and ask question, please. Yeah. All right. So I will see. Sambhav asked, if I have a technical product ready, where should I advertise it? So Sambhav, the question there would be ki, okay, so first I'll begin by, for whom have you built the product? किसके लिए है? अकाउंटेंट के लिए, मार्केटर के लिए, डेवलपर के लिए? आंसर उस पर डिपेंड करेगा. आई वुड से द रियल आंसर इज, जहां पे आपका कस्टमर है वहां पे आप जाएंगे, वहां पे एडवर्टाइज करेंगे, वेदर वो ट्रेड शो में है या फेसबुक में है या गूगल में, लिंक्डइन में. सो दैट इज वेयर द थिंग इज. अगेन, इफ यू कैन maybe give me a little more, I can even give you more on कि कैसे उसको market कर सकते हैं. Go ahead, guys. Any other question? So, Ravi, I have a question, Puneet here. Yeah. So Ravi, I think students के लिए it's a very good opportunity to speak to you and get some of their queries answered live with you. Sure. In my time when I was studying and I have completed my engineering from Bhopal, I never had this opportunity. So similar lines पे मेरा question ये है कि how important is coaching or mentoring in this journey? So my sense is कि two ways it plays a role. Number one, there could be lot of people जो आज रूम में बैठे हैं जो कि बॉर्डर लाइन थे, उनके मन में थोड़ी सी इच्छा थी, मे बी 20%, और आज की टॉक या किसी और की टॉक सुन के वो इंस्पायर हो गए या उन्होंने सोचा नहीं मुझे यही करना है, तो उन लोगों को फर्क थोड़ा सा पड़ेगा. या जिन्होंने ऑलरेडी 80% मन बना लिया, उनको थोड़ा सा पुश चाहिए, राइट. पर उसके अलावा अगर मान लीजिए आप स्टार्टअप ऑलरेडी चला रहे हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, आप स्टक हैं, तो ऐसी कम्युनिटीज आपको हेल्प कर सकती हैं. बट इवेंचुअली ये मैं बोलूंगा, जर्नी तो आप ही की है. जो भी प्लस और माइनस है, जो अप एंड डाउन है, आप ही को झेलना है, आप ही को वो करना है. मतलब दैट्स अ फैक्ट, राइट. देयर लॉट ऑफ जॉयज एंड देयर लॉट ऑफ स्ट्रेस आल्सो. वो आप ही को करना पड़ेगा. बट आपको हो सकता है थोड़ी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन और मिल जाए ऐसे उससे. एंड आई एम नॉट अंडरमाइनिंग इट, बट आई ऑल्सो डोंट वांट टू ओवर एम्फसाइज, बिकॉज इवेंचुअली एन एंटरप्रेन्योर हैज टू बी लाइक that person who can figure out a solution. You throw anything at him or her, so that's what I would say. But this definitely has, without a doubt, right? कोई इसमें डाउट नहीं. मैं अपना एग्जांपल देता हूँ. जैसे अभी मैं आपको बोलता हूँ हम लोग जिस स्टेज में है, तो आपको क्या लगता है हमको हेल्प नहीं चाहिए? हमको भी चाहिए, हम लोग भी स्टेज. तो अभी हम लोग बोलते हैं वी हैव a group called SaaS Bhumi. Okay, SaaS Bhumi is a group of SaaS entrepreneurs in India. राइट फ्रॉम से $1 billion कंपनी जो कि फ्रेश वर्क्स है, जिसमें गिरीश आता है या जोहो वाले आते हैं, राइट. तो वो सब उसके ग्रुप हैं. तो अभी हम लोगों का 2 वीक पहले एक उन्होंने लाइव वेबिनार किया था, जैसे अभी हो रहा है, सारे सैस फाउंडर्स का. इंडिया के सारी सैस कंपनीज थी उसमें, बिलीव मी 150. और उन्होंने ये बताया कि हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग कैसे इस कोविड को कैसे हम लोग टैकल करेंगे एज ए सैस कंपनी, हम लोगों को क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए. तो वो लोग हमको गाइड कर रहे हैं. तो ये वही बात है, हम लोग क्या, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, कम्युनिटी में ये होता है कि यार वो 100 मिलियन पे, वो 50 मिलियन वाले को हेल्प कर रहा है, 50 मिलियन वाले 20 वाले को कर रहा है, 20 मिलियन वाला 10. तो उसी तरह से चलता है, राइट. तो वो तो रहता ही है. बट मैं ये पॉइंट बोलने के अलावा भी बोलना चाह रहा हूँ कि जो है सब कुछ वो एंटरप्रेन्योर का ही है. ये मैं उसको वो नहीं करना चाहता हूँ, राइट. सिर्फ वो पुश ही मिल सकता है, बट करना तो उसी को है ना. So absolutely. Thanks Ravi. Yeah. Also sir, we have kind of a mixed audience here. So ज़्यादातर लोग engineers ही हैं,
आईआईटी बॉम्बे में ड्यूरिंग एन ई समिट मैं उमेश राठौर सर से मिला था. अच्छा. So he told me that engineers are worst kind of entrepreneurs because they have all the technical knowledge they need to create the product or to create a SaaS product, something like that. But they are very poor in marketing and finances. It's one challenge that I see that my fellow college mates are facing right now. Any tips for that? Because you also started in your early college years, right? So Correct. any So advice for that? So I think one of the reasons why some of the engineers may not succeed is, one is they are probably driven by यार कि यार मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, यार क्या लिखने से मेरे घर में खुश होंगे या मेरे फ्रेंड्स. तो मेरा पॉइंट है कि पैसा बनाना या रनिंग अ बिजनेस इज वेरी डिफरेंट. कि यार मैं एआई बना रहा हूँ कि बिग डेटा, वो बहुत अलग है. हो सकता है कि एआई में अगर आपको पास रेलेवेंट है तो आप बनाओ, बट सिर्फ इसके लिए नहीं बनाना चाहिए. सो लॉट ऑफ द टेक फोक्स आर मोर इंटरेस्टेड कि यार ये बनाऊंगा तो ये मेरा बहुत अच्छा लगेगा, पर कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. सो दैट इज वेयर द बिगेस्ट डिस्कनेक्ट ऑफन हैपेंस, राइट. तो वो टेक एंटरप्रेन्योर जो थोड़ी भी कस्टमर की सुन लेते हैं ना, वो बहुत सक्सीड करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट कस्टमर, नॉट अबाउट कि आपकी क्या स्किल है, आपको क्या आता है. लॉट ऑफ देम आर डूइंग इट मोर एज कि यार मेरे को ये आती है, मेरे को ये स्किल सीखनी है, आई विल बिकम द बेस्ट. तो वो थोड़ा सा एक एस्पेक्ट हो जाता है. दूसरा, सम ऑफ देम आर मे बी नॉट गुड इन सेल्स, दैट इज ट्रू, एंड समटाइम्स दे पिक अ प्रॉब्लम जिसमें सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएं तो आप अपनी स्ट्रेंथ भी देखें ना यार, कि अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें कि डोर टू डोर सोल्स लगेगी और आप टेक एंटरप्रेन्योर है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर बनाया, पर वो एसएमबी को बेचना चाह रहा था. तो अब भाई उसमें डोर टू डोर सेल्स लगेगी या अलग सेल्स, तो वो उसको बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है. तो जब आप प्रोडक्ट बनाएं तो ये भी देखें कि यार इसमें क्या क्या चाहिए, आपके पास है कि नहीं. ऐसा ना बनाए जिसमें कि बिल्कुल हार्डकोर सेल्स भी चाहिए और आपके पास वो नहीं है. तो वो थोड़ा सा, मतलब यू हैव टू नो विच गेम टू प्ले इज द वे आई पुट इट, राइट. So I picked the game which I think I could play, because for example PushEngage is a marketing product. I was a marketer for last 6 years. Second, I have built products as a software guy, so I understood, and I was a marketer, so I knew ki I had a better chance. I'm not saying फिर भी success was guaranteed, है ना. So that's kind of the way I would say, है ना. Hope it Also, helps. sir, Yeah. when Yeah. you, I also read that the PushEngage was kind of one of its kind when it was launched. So, Sure. so it's not a trend in the market, right? So you Sure. created a trend, kind of. So I So, think being early in the market is very important, what you're saying, which is also true. हमने देखा कि जब लॉन्च हुआ था तभी हमने देखा एक या दो ही टूल है, तो हमको लगा. तो being early sometimes does help. So you're absolutely right, है ना. तो that can so always play. हाँ. तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को मैं देखता हूँ जैसे सोशल मीडिया पे फॉलो करने पे, तो वो लोग कहते हैं कैच ट्रेंड्स अर्ली इन द मार्केट. बट ट्रेंड्स में कभी कभार ऐसा होता है कि वो ट्रेंड्स, जैसे आपने अभी बताया डिजिटल एज का वो स्पाइक आई थी उसके अंदर, बट देन इट वेंट डाउन. सो इट्स ऑलवेज अ रिस्क देयर. सो इज देयर एनी Correct. वे टू एनालाइज दैट रिस्क मैनेजमेंट देयर? तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम लोग ट्रेंड्स कैच करते हैं, तो ट्रेंड कहाँ से कैच करें. हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूज से पढ़ रहे हैं, मीडिया से पढ़ रहे हैं. जब तक वो आर्टिकल छप रहा है ना, आप ये मान के चलो वो 6 महीने 1 साल पुराना हो चुका है. जो सही में जो ट्रेंड पकड़ रहे हैं वो वही पकड़ रहे हैं जो मार्केट में है. तो आपको अगर ट्रेंड अर्ली पकड़ना है तो यू शुड बी इन द मार्केट. तो अगर मान लीजिए आप कोई कंपनी चला रहे हैं, उस एरिया में काम कर रहे हैं, तभी आप ट्रेंड पहले पकड़ सकते हैं. आप ये मत मान के चलिए कि आप किसी आर्टिकल पढ़ के या न्यूज पे पढ़ के, मतलब फिर तो आप यू आर नॉट एट ऑल. इन माई ओपिनियन आर्टिकल तभी छपता है 1-2 साल के बाद में. इट्स अ पोस्ट द फैक्ट, राइट. तो दैट इज माई सजेशन. सो द ओनली वे टू कैच अ ट्रेंड इज टू आइदर हैव अ डायरेक्ट फील फॉर द प्रॉब्लम, बिकॉज आपका कोई फ्रेंड है जो कस्टमर है या पोटेंशियल, या आप उसमें काम करते हैं. सो इन द ओके, थैंक बिगिनिंग मैं तो ये भी बोलूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यू डोंट हैव टू ऑलवेज कैच अ ट्रेंड, पिक अ बिग स्पेस. मैंने अभी इसमें बोला नहीं, मतलब बट द समरी इज की अदर बिगेस्ट थिंग टू बी सक्सेसफुल इन अ प्रोडक्ट कंपनी इज की बहुत बड़ी उसकी स्पेस होनी चाहिए. यानी कि आप मान लीजिए अगर सीआरएम पे बनाते हैं, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि सेल्स के लिए यूजफुल है, वो बहुत बड़ी स्पेस है. भले ही आपकी वो 101 स्टार्टअप होगी, पर अगर स्पेस बहुत बड़ी है, उसमें कस्टमर्स की पोटेंशियल बहुत है, तो आप भले ही 2% या 1% भी एक्वायर करेंगे मार्केट, तो भी आपका 10 करोड़ का बिजनेस बन जाएगा. ये मैंने पॉइंट पहले नहीं बोला, बट ये फिर से एम्फेसाइज करना चाहूंगा. जब आप आइडिया देखें तो मेक श्योर कि वो बहुत बड़ी स्पेस में हो, तो उसकी सक्सेस की चांस ज्यादा रहती है, राइट. ऑल्सो सो सर, आपने जैसे बोला कि स्टार्टिंग में वी कैन आइदर क्रिएट आवर ओन प्रोडक्ट, व्हिच इज बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स फॉर अस राइट नाउ.
but there's also, you said that we can also join product based companies, Correct. but आजकल जैसे हम लोग देखते हैं कि product based companies में place होना is way more difficult than any MNCs, because Correct. product based companies might require a lot more Sure. in-depth knowledge of the technology. So Correct. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए अपन जैसे मेरे बहुत सारे, आज मैंने आपसे बोला कि मिक्स्ड ऑडियंस है, सो बहुत सारे ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योर्स, दे वांट टू वर्क विद स्टार्टअप, दे डोंट ओन अ स्टार्टअप, बट दे Sure. डू वांट टू वर्क विद स्टार्टअप रादर Sure. देन एमएनसी और एनी ट्रेडिशनल जॉब. सो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के बारे में भी थोड़ा आप एलैबोरेट करें प्लीज, कि हाउ कैन Sure. वी एम फॉर दैट, हाउ कैन वी स्टार्ट वर्किंग विद दैट. You can also tell how Sure. can we join you in your No, no, absolutely. So startup, मैं आपको ये if बताता हूँ possible, sir. दो. No, no, absolutely. दो मेथड है. नंबर वन, you can look at, let's say, a list of, so there are, let's say, in India more than 500 to 1000 products, SaaS products. SaaS भूमि जैसे एक Yes, ऑर्गेनाइजेशन sir. है, उनकी आप डायरेक्टरी देखें, उन्हीं की 250 टॉप स्टार्टअप्स की डायरेक्टरी है. ठीक है, मान लीजिए, हो सकता है, देखिए, इट्स ऑल अबाउट परसिस्टेंस. आपको सच में इंटरेस्ट है तो पहले तो अपनी स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी प्रोग्रामिंग की, राइट, और वो जो भी डोमेन है उसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज होना पड़ेगा, फिर आपको Sure, ट्राई sir. करना पड़ेगा, राइट. तो वो मेरा पहला हाई लेवल आंसर है, क्योंकि कई लोग गिव अप बहुत जल्दी मारते हैं. दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट्स ऑल इट इज, राइट. सेकंड, जो जो ट्रिक्स हैं वो मैं बोल सकता हूँ, आप इंटर्नशिप ट्राई करें. हम लोगों ने भी भोपाल के कई कॉलेजेस से फॉर लास्ट 3 इयर्स हमने इंटर्न लिए हैं, और इंटर्न्स फिर फुल टाइम बने. तो हमारे हिसाब से जो सबसे बेस्ट टैक्टिक है, आप इंटर्नशिप का ट्राई करें उन कंपनीज पे, और फिर इंटर्नशिप आपको फिर भी इजी होती है मिलना, वो करें, और फिर उसके बाद आप फुल टाइम. तो उससे क्या, अपने आप ही वो भी आपको समझ जाएंगे, आप भी उनको समझ जाएंगे. सो दैट इज माई सेकेंड थिंग, राइट. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट. आज की डेट में एमएनसी या सर्विसेज कंपनी इज 5 to 10 times easier than getting into the product, but that's the whole fun. If you can get into a product company, the amount you will learn will be so much. And a lot of people come in and say ki, I am here because I want to do a startup, and we are totally fine with it, right. And again, to answer the final question which you asked about हमारी company, so अभी तो हम लोग ने, we are already hired, but again you can stay in touch, right, if we open up for any internships or this thing. So there are always, but there are fewer of those, right, because fewer positions that way exist in product companies. Yeah. Also, one last thing, sir. It was a very informative session based on how to get from product to the customers. But many of my friends struggle with the idea to product. That first Okay. stage is also kind of very difficult for Correct. them, Correct. बिकॉज अगर जैसे किसी आइडिया मेरे पास भी थे, मैंने भी लोगों के साथ वर्क करा, मेरे फ्रेंड्स ने भी ट्राई करा वर्क करने की, बट दे मेट चैलेंजेस लाइक टीम बिल्डिंग, और जैसे उनके पास जो आइडिया था उस पर वो खुद नहीं वर्क कर पा रहे थे सीख के, तो दे वांटेड टू हायर सम प्रोफेशनल, बट अगेन द मॉनेटरी फंड एंड ऑल, तो वो फर्स्ट स्टेज भी काफी डिफिकल्ट होता है. Correct. प्रोडक्ट टू कस्टमर्स is one thing that that justifies the success of your idea, but that first stage of from idea to that product is also very crucial, Correct. don't you think so? Yeah, so and I think specifically for somebody who is just graduating out of school, वो बहुत टफ होता है. देखिए, हम लोगों ने एटलीस्ट जब मैंने स्टार्ट किया, I would have maybe worked for 10 or 15 years already, right? So the point I am trying to make then is कि उस समय तक, क्योंकि we have seen so much of the industries, so ideas are little easier to get, right? पर जो fresh start कर रहा है उसके लिए hard है, absolutely agreed. And again, there is no easy answer to it except कि you go deeper into a space, or you maybe do internships in that space to understand कि क्या problems हैं, and then you pick. The other method, which I will say will sound very non obvious and very unconventional, yeah, not so cool, is you can look at a big space, okay, and see कि बहुत बड़ी space है, and then you can even go in and just build something which is in a big space, which is in some sense a copy or something. It's nothing wrong with that, right? And there are so many such companies which have done that and they've existed. For example, I mean, I won't say much names, but let's say even in search engine, there was a search engine one, then search engine 2 came. Then in CRM space or customer success space, or what I call as a help desk space, right? In every industry, there is always an incumbent, and from that incumbent there will be 5 new startups which will come. अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है तो कोई ऐसी वो नहीं, ये सब लोग बोलने की बातें हैं, वीसी भी कई बार बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नया ही निकालना है. ओके, आपको कोई जरूरी नहीं कि आइंस्टाइन बनना है. आप जाइए, आपको बिजनेस बनाना है,
आप जाइए, ढूंढिए वो स्पेस जो आपको समझ आती है, बढ़िए, देख लीजिए अगर उसमें वो कंपनी 100 मिलियन रेवेन्यू बना रही है कि नहीं, उससे ऊपर बना रही है तो मान के चलिए आप 1% भी लेंगे तो आपका 1 मिलियन हो गया, तो आप बना सकते हैं। बट रिमेंबर करिए, अगर आपको फंडिंग लेनी है तो वो स्पेस बहुत बड़ी होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा होना चाहिए आपका। और अगर फंडिंग नहीं लेनी है तो फिर तो आपका 100 मिलियन प्लस जो प्रॉक्सी मेथड चल जाएगा। तो उसमें अगेन देयर आर टू पार्ट्स, लाइक आई सेड, वन इज डू यू वांट टू रेज फंडिंग विद दैट आइडिया और नॉट, और डू यू नॉट। So I hope this kind of gives you some ideas of how to pick up a idea to build. Definitely, sir. Also, we have with us our college authorities. Also, Manish Bilal sir is our director training and placement of Oriental, and he's also appreciating you for being with us. These, as I said before, conditions are not ideal. Thank you, Manish sir. Also, I would like to introduce. We have Rajat sir from EMC, and I would like to hand over to Punit sir to take this session further. Yeah. Thanks, Yad. And thank you, Ravi. Indeed, it was really enlightening session for me, having been in the industry for 10 plus years now. Had I had this kind of exposure or guidance before, I would have done wonders. But nevertheless, I guess students would have had great time today. And thank you, Oriental College and Manish Bilore sir and Ziyad for organizing this. So moving on to our next, guest speaker today. Before that, I will just take a brief 2-3 minutes just to for the students who are with us in the live feed. If they want to reach out to us, we have been discussing about these kind of topics with our emerging minds community. We are a community of like-minded people. We encourage these kind of discussions. We have a lot of professional coach and mentors who have done this journey before, and they support these kind of discussions. पहले भी कई बार लोग आ चुके हैं हमसे जुड़ने के बाद कई टॉपिक्स पे, जैसे कि रवि सर ने भी कवर किया, कैसे सेगमेंट करें अपने मार्केट को, कैसे अपने टारगेट कस्टमर को तक पहुंचे, एंड हाउ टू पोजीशन योर आइडिया और प्रोडक्ट बेसिकली, that those kind of discussions. Or if you talk about the tax like the SaaS platforms, or what are some of the freely available tools and things I can start coding with, like software as a service packages from Amazon, Google, or others in the market who provide for entrepreneurs to develop their ideas. Or so emerging mind community is a community like that. And as you can see on your screen right now, there's a link, you can write on that. And you can also reach out to Ziyad, who has organized this session along with Oriental College, to reach to us. And so that's it about emerging minds community, and I think I have taken enough time now. Without further ado, I would like to call Mr. Rajat Pallav, who is running a successful campaign to develop entrepreneurship and IT in Bhopal. We have a Facebook page called as Bhopal IT. So over to Rajat sir. Hello, friends. My name is Rajat, and first of all, I would like to, take this opportunity to thank Ravi, Ziyad, and of course Punit, and Bilal also. And we hope that all the participants were, took away something out of it. So basically, we formed this group inspired by some other campaigns which were done online, and we all came together, and the group was formed way back in December 2018, and we have been going ever since then. And it has been a journey in which we got a lot of good, nice, enthusiastic people who came along with us. Like Puneet is there, Bilal is there, and so many other. And now we are nearing about 5,000 odd people. And we basically started off to promote industry as well as IT both. But as you all know, the momentum was more
with IT, and we kept on adding more and more people who were in the IT profession. Some were entrepreneurs, some were students, some were working in big companies, and we have been interacting with the government of MP at secretary level, IAS level people, senior IAS people, and we have been pushing our agenda to facilitate atmosphere in Madhya Pradesh and specifically in Bhopal, where young entrepreneurs can come, work, and grow and establish themselves as reputed companies. Many industries like Dilip Buildcon and all these people are working and have been pretty successful. They are leaders in construction company. So our aim is to promote and nurture a company, IT company from Bhopal, which can be called as an example, which can be a leader. So we need the student community, because you are young, you are looking for things, you are tomorrow you will go out and you will be joining some company or starting on your own. So all this is going to build up a momentum where the Bhopal city will be benefited. There will be more people, there will be more industry, there will be more jobs. So all these things um, will come in our city. So that is what is our aim. And thank you to all the students and management of Oriental for giving us this opportunity, giving us this chance where we could interact with your students, and we look forward to more such interactions in future also. Thank you very much, and keep motivating each other, keep motivating us, join hands, and let us grow together. Thank you very much. Thank you very much, sir. We also have, I would like to thank all the EMC members who came together and made this session possible. We have with us Professor Rameez Ali, sir. He is the mentor of our ESL, who mentored us in uh, making this session possible. Hello, sir. Anything you Hello. would like to add for this session? Yes, yes, of course, Ziyad. Thank you, Ziyad, so much, so very much. Hello, guys. Hello, friends. On the behalf of Oriental College of Technology, I'm a faculty coordinator of ESL out there. So I just wanted to extend a very hearty thanks to Mr. Trivedi first, the founder of PushEngage, for a wonderful session and enlightening us and took out his valuable time from his busy schedule. So thanks to you, sir. I also would like to extend a special thanks to Emerging Mind Mr. Aasim Akhtar and Mr. Bilal for supporting us, my student, and giving us this such a wonderful session. So thanks to all, and hope I'm looking forward for it in future as well as. So thanks everyone. Thanks, Rameez. I think your words will help us go a long way. Yes, And from Emerging Minds community, I would like to thank you, Oriental College, for having this opportunity to have us express our opinion, have us call Mr. Trivedi and speak to students. It's like Rajat sir told. It's a very big agenda for Bhopal IT Cell and Emerging Minds community to have lots of students, fresh minds onboarded, so they can contribute and we all can grow together. Thanks, Rameez. yes, definitely. Yes. Thank you. Questions. Let's end this on this note that it's a good initiative. I thank EMC and I thank Oriental for helping us with this session, and I'm sure we'll take it to some heights soon. Yeah, thank Absolutely. you. Absolutely. Yeah. Thank you, Thank friends. you very much. Thank you, Thanks. everyone. Thank you very much, Thanks everyone. all. Thanks all the students for joining. Thank you, Pan.